Good evening to all. Once again, I'm here in the new session of spoken English and competitive English too. So फटाफट से सारे लोग ज्वाइन कर लीजिए एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आप एक बार मुझे बता दीजिए कि आवाज वगैरह जा रहा है कि नहीं जा रहा है. आवाज वगैरह आ रहा है. चलो ठीक है. Now, this is the time to start the session. What have you studied in the last class? क्या पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास के अंदर? क्या डिस्कस किए थे? We were discussing about relative pronoun. यही किए थे हम लोग. रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर हमने आपके साथ ये डिस्कस किया था. 4-5 चीजें हमने छोटी छोटी डिस्कस की थी जो कि एक साथ मिलके एक बड़ा चीज बन जाता है. वो क्या था? देखो, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर अभी तक हमने सिर्फ 2 ही चीजों के बारे में बात की है. एक तो था हु, दूसरा था हुम. ठीक है, अभी तक हमने इसी के बारे में डिस्कस किया है. अब हु जो होता है वो कभी भी जब ये रिलेटिव प्रोनाउन बनता है तो किसी का सब्जेक्ट के लिए काम में आता है, और जब whom जो होता है वो किसी के ऑब्जेक्ट के काम में आता है. इससे लॉजिक एकदम क्लियर हो गया है कि who का यूज कहां करेंगे और whom का यूज कहां करेंगे. बट इसके अपोजिट कुछ 1-2 चीजें और आती है जहां पे who के जगह पे whom हो जाता है और whom के जगह पे who हो जाता है. वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. इसके अलावे और भी कल हमने डिस्कस किया था, वो क्या था? एडजेक्टिव के बारे में. एडजेक्टिव इज ऑल अबाउट क्वालिटी. और दूसरा जो था वो क्या था? एडजेक्टिवल फ्रेज के बारे में, जहां पे एक प्रीपोजिशन के साथ जो चीजें आती थी वो क्या हो गया? एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया था. नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था वो क्या डिस्कस किया था? एडजेक्टिवल क्लॉज डिस्कस किया था. क्या डिस्कस किया था? एडजेक्टिवल क्लॉज डिस्कस किया था. ठीक है, पिछली क्लास में हम आपसे ये बोल के गए थे हु इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट एंड whom इज यूज्ड फॉर सब्जेक्ट. ये क्या है? हु इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट एंड whom इज यूज्ड फॉर सब्जेक्ट. ये उल्टा कहां से आ गया? अरे किसी का सब्जेक्ट नहीं रहता है तो उसको बनाने के लिए हम लोग हु का यूज करते हैं. चलो ओके, तो आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? लास्ट क्लास में हमने आपको बता के रखा था, एक्चुअली हम लोग डिस्कस करें प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं जो हमने आपको बार बार बता रखे हैं. एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं. क्या था वो? पर्सनल प्रोनाउन. दूसरा क्या था? पजेसिव प्रोनाउन. पर्सनल क्या हो जाता है? आई, वी, यू, दे एंड सिमिलरली मैनी मोर. पजेसिव क्या हो जाता है? हिज, हर और माइन, हिमसेल्फ. ठीक है, रिफ्लेक्ट. अच्छा, हिमसेल्फ तो रिफ्लेक्सिव हो गया.
हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव हो गया। एम्फेटिक जो जोर दिया जा रहा है वो एम्फेटिक है। रेसिप्रोकल जो एक दूसरे की ओर, एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन हो रहा है, दोनों एक दूसरे को समझाने का ट्राई कर रहे हैं, उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? रेसिप्रोकल। इंटरोगेटिव जितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या है? इंटरोगेटिव है। ठीक है। रिलेटिव क्या है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रिलेटिव क्या है? हु रिलेटिव है। रिलेटिव क्या है? whom रिलेटिव है। रिलेटिव क्या है? which रिलेटिव है। रिलेटिव क्या है? that रिलेटिव है। ठीक है ना, ये है। चलिए यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है एंड आई डोंट थिंक यू हैव द प्रॉब्लम इन दैट। मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विद रिलेटिव प्रोनाउन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या? हु एंड हुम का। हु एंड हुम का डिस्कशन कर रहे हैं। हु एंड हुम का डिस्कशन में हम लोग आज देखने वाले हैं क्या? एडवर्ब, एडवर्ब, adverbial phrase and adverbial clause, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले एडवर्ब, एडवर्बल फ्रेज एंड एडवर्बल क्लॉज, ये तीनों चीजें देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। रिलेटिव प्रोनाउन हमने आपको बता के रखा है कि ये यूज ही क्यों होता है। रिलेटिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर क्लॉज को बताने के लिए, क्लॉज को बताने वाले नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए लिखा जाता है। क्या? क्लॉज को बताने वाले नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए लिखा जाता है, उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। गुड इवनिंग एवरीवन, सबको गुड इवनिंग है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग बातचीत वाले सेशन में आएंगे, तो जितना बात करना होगा कर लेना मुझसे, ठीक है? चलो ओके। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज एंड एडवर्बियल क्लॉज। तो अभी तक जितने सारे लोग नहीं ज्वाइन किए हैं जुड़ जाइए सारे लोग फटाफट से, सबको पता है, सारे लोग जुड़ जाइए। चलो नाउ सबसे पहला आज को हम लोग को जो सेशन में है वो है क्या? वो है क्या? एडवर्ब। एडवर्ब होता क्या है? आप पहले ये समझो कि एडवर्ब बोलते किसको है। पहले आप ये देखो कि एडवर्ब होता क्या है। आप में से कुछ ऐसे हैं जो बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। फटाफट से बताओ कि क्या होता है एडवर्ब। क्या होता है एडवर्ब? एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है क्या? एडवर्ब उस चिड़िया का नाम है जहां पे ये वर्ब, जहां पे ये एडजेक्टिव और जहां पे ये एडवर्ब इटसेल्फ, जहां पे ये वर्ब, जहां पे ये एडजेक्टिव और जहां पे ये एडवर्ब इटसेल्फ की क्वालिटी बताने लग जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, हमने एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल लिया, ही runs fast, he runs fast। जब हम इसको ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं? जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो मुझे देखने के लिए ये मिल रहा है कि ही तो सब्जेक्ट है, रन्स तो वर्ब है और फास्ट जो है वो एडजेक्टिव है। यहां तक क्लियर? कैसे पता? कैसे पता कि फास्ट जो है वो एडजेक्टिव है? ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कौन तेज दौड़ता है? यही ना क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? तेज कौन दौड़ता है? तो वो दौड़ता है, वो दौड़ता है। और एडजेक्टिव को डिफाइन कैसे करेंगे? जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता दे। क्या कर दे? जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्या बता दे? क्वालिटी बता दे। जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता दे, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। अब जब ये एडजेक्टिव बोलेंगे तो फास्ट कौन दौड़ता है? वो फास्ट दौड़ता है। अब इसी का एक और एग्जाम्पल लो, एक और एग्जाम्पल लो। हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने एक एग्जाम्पल लिया
he runs so fast, he runs so fast, he runs so fast, वो बहुत तेज दौड़ता है। तो अब एक चीज बताओ मुझे आप कि फास्ट तो एडजेक्टिव है, ही तो सब्जेक्ट है, रन्स तो वर्ब है, तो फिर शो क्या है यहां पे? अब मुझे ये पता करना पड़ेगा ये लिंक किससे है। ही रन्स सो फास्ट, सो फास्ट बहुत तेज, तो ये आ किसके लिए रहा है? ये इसके लिए आ रहा है। तो कर क्या रहे हैं? ये क्वालिफाई कर रहा है एक एडजेक्टिव को। कैसे दौड़ता है? तेज तो दौड़ता है, बट कितना तेज दौड़ता है? सो फास्ट सर, ही इज सो फास्ट, ही इज रनिंग सो फास्ट, ही रन सो फास्ट सर, यू हैवंट सीन हिम, आप उसको देखे नहीं हैं, वो बहुत तेज दौड़ता है। ही रन्स सो फास्ट, ही रन्स सो फास्ट। अब ये फास्ट के लिए बोला जा रहा है, मतलब एक एडजेक्टिव के लिए बोला जा रहा है। जो एडजेक्टिव के लिए बोला जाए उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्ब। ठीक है, क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? क्वालिफाइज अ वर्ब ऑफ एन एडजेक्टिव। और एडवर्ब भी ना, जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता, खुद को कभी कभी कर देता है, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। खुद को, खुद का क्वालिटी बताने लगता है कि हम इतना सापन है। ठीक है, अभी आगे एग्जाम्पल में आएगा। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं एडवर्ब। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, एक और एग्जाम्पल ले लो छोटा सा, एक और एग्जाम्पल ले लो। हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने बोला क्या? हमने बोला he runs very fast, he runs very fast, और बहुत तेज दौड़ता है। he runs too fast, he runs too fast, he runs too fast। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। दो वेरिएशन लिए हैं एडवर्ब का, वो देखो आप। he runs very fast, वो बहुत तेज दौड़ता है सर, बहुत तेज दौड़ता है सर, इतना तेज दौड़ता है ना कि पूछिए मत। हाँ, लेकिन इतना तेज दौड़ता है कि कंट्रोल कर ले। वेरी फास्ट, बहुत तेज, लेकिन इतना तेज है कि वो कंट्रोल कर ले। लेकिन देखा सर कि अब नहीं जीत पाएगा, एकदम जान लगा दिया सर, एकदम जान लगा दिया। इतना तेज दौड़ा सर, इतना तेज दौड़ा कि जब रुकने की बारी आई तो रुक ही नहीं रहा है, और जाके ना सर दीवार में एकदम चकटा गया, मुंह नाक उसका पूरा बराबर हो गया, मतलब स्पीड इतना बढ़ गया कि रुका ही नहीं। ठीक है ना? अभी जैसे वेरी टू एडवर्ब। हाँ, अभी जैसे एक अभी रिसेंटली यहाँ पे हरूम एक्सीडेंट हुआ था, इतना तेज आया ना कि डिवाइडर डगा कर मारा, सब का सब को चौपट कर दिया। मतलब कि इतना तेज दौड़ा ना सर, इतना तेज एकदम चलाया ना सर कि वो ब्रेक ही नहीं ले पाया, और जब ब्रेक नहीं ले पाया मतलब वो क्या हो गया? टू। तो टू जो है ना वो हमेशा नेगेटिव सेंस देता है। ये टू जो है वो इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि जिसका जरूरत नहीं है सर। ही इज टू फैट सर, उसको सर 4 तो उठाता है सर मिलके। ही इज टू फैट। तो टू फैट क्या होता है? टू फैट क्या? ये भी टू फैट एडजेक्टिव को ही क्वालिफाई कर रहा है लेकिन नेगेटिव सेंस में कर रहा है, और ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है लेकिन पॉजिटिव सेंस में कर रहा है। समझ में आ गया? एडवर्ब क्लियर? नाउ लेट्स हैव सम एग्जांपल। आपके लिए कुछ एग्जांपल है। यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया और हमने बोला आई सॉ हर यस्टरडे, I saw her yesterday। जल्दी से बता दो कि इसमें एडवर्ब क्या है। एकदम छोटा सा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे पता चल जाएगा। I saw her yesterday, मैंने उसे ना कल देखा। Now tell me। जल्दी से बता दो फटाक से। मैंने उसे कल देखा, I saw her yesterday। नो एडवर्ब। ओके, और कोई? एनीबडी एल्स? I saw her yesterday। सी तो वर्ब ना है,
देखना एक्शन में है, काम में है। और कोई? नो एडवर्ब। चलो ठीक है, देखो ब्रेक करना सीखो पहले। आई क्या है? सब्जेक्ट है। सॉ क्या है? वर्ब है। हर क्या है? प्रोनाउन है। यहां तक क्लियर? एक बात बताओ, देखा कब? कब देखा? कब देखा भाई साहब? कब देखा? कल देखा। ठीक है, कब देखा? तो कल देखा। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? किसको क्वालिफाई कर रहा है? यस्टरडे जो है वो किस चीज के लिए बोला जा रहा है? देखने के लिए ना, कि कल ही तो देखे थे। यस्टरडे जो है किसके लिए बोला जा रहा है? कि कल तो देखे थे, कल तो देखे थे। एडवर्ब ऑफ टाइम, कल तो देखे थे इसको। तो ये क्या है? यस्टरडे क्या है? एडवर्ब है। यस्टरडे क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ टाइम। I saw her yesterday. I will talk to you tomorrow. I will talk to you tomorrow. I will talk to you tomorrow. बात कब करेंगे? कल करेंगे। कब करेंगे? कल। कल बात करेंगे। ये क्या है? एडवर्ब है। Unfortunately, I missed her. Unfortunately, I missed her. अरे मिस कैसे कर दिया सर आप? मिस कैसे कर दिए? हो गया, दुर्भाग्यवश हो गया, आप क्या कर सकते हैं? इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। कैसे मिस कर दिए आप? मजा ही आ जाता। जोड़ी तो आप लोग का इतना मस्त था ना कि पूछिए मत। आपका ईगो सब बर्बाद कर दिया सर। सो अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड हर। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश क्या है? एडवर्ब है। कैसे पता चला? ये क्या कर रहा है? एक्शन, वर्ब। वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब दिखा रहा है। चलो अगला एग्जाम्पल लो फटाक से। नेक्स्ट, दे रेयरली मिस दैट मॉर्निंग जॉब। जल्दी से बता दो आप मुझे फटाफट से। दे रेयरली मिस देयर मॉर्निंग जॉब। They rarely miss their morning job. चल हो गया क्या? रेयरली मिस। अच्छा, कोई दिक्कत हो रहा है ना? देखो थोड़ा सा भी दिक्कत होता है ना, पार्ट पार्ट अलग कर दो। अलग कर दोगे अपने आप समझ में आ जाएगा क्या है। बस यही करना है आपको। दे सब्जेक्ट, मिस वर्ब, देयर, देयर मॉर्निंग, देयर मॉर्निंग। देयर क्या है? देयर क्या है? बता दो जल्दी से। डेमोन्स्ट्रेटिव
एडजेक्टिव, ठीक है। मॉर्निंग, मॉर्निंग जॉब क्या है? मॉर्निंग जॉब, जॉब क्या है? जॉब क्या है जल्दी से बताओ, जॉब क्या है? नाउन, एक नाम है, ठीक है ना। मॉर्निंग क्या है? मॉर्निंग, इवनिंग है क्या? टाइम, ये भी एडवर्ब, रेयरली भी एडवर्ब, अभी जस्ट बताए थे। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, रेयरली एंड मॉर्निंग बोथ, ओके गुड। नेक्स्ट अगला वाला देखो, अगला नेक्स्ट, शी ऑलवेज कंप्लीट्स हर असाइनमेंट ऑन टाइम। जल्दी से कंप्लीट करिए फटाफट से, जल्दी से। टाइम, ओके। ऑलवेज, असाइनमेंट तो नाउन है, ऑलवेज एडवर्ब, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगला देखो, अगला नेक्स्ट, इस पे काम करो फटाफट से सारे लोग। He frequently visit his, इसको पढ़ो और बताओ ये क्या है, ये पढ़ो आप, क्या है ये? He frequently visit his which village? Which village? Which village? Tell me. Which village? Ancestral village. Ancestor आप सुने होंगे, Ancestor आप सुने होंगे, क्या? पूर्वज। Ancestor क्या होता है? पूर्वज, आप सुने होंगे इस चीज को, है ना। Ancestor, he frequently visits his ancestral village. He frequently मतलब लगातार, फ्रैक्शन ऑफ टाइम वो जाते रहता है, ठीक है, पूर्वज। हाँ, तो इसमें एडवर्ब क्या है? इसमें एडवर्ब क्या है बता दो? फ्रीक्वेंटली, क्या है? फ्रीक्वेंटली, ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ, फ्रीक्वेंटली फ्रैक्शन ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंटली लगातार जाते रहता है, तो ये है क्या? ये है क्या? एडवर्ब। ये क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट अगला बता दो। अब आते हैं हम लोग एडवर्बल फ्रेज पे। एडवर्बल फ्रेज होता क्या है? जिस तरह से आपका एडवर्बल जो एडजेक्टिव था, एडजेक्टिवल जो फ्रेज था, उसमें क्या था कि एक से ज्यादा वर्ड, और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कोई एक प्रीपोजिशन आना चाहिए। एडजेक्टिवल फ्रेज के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कोई एक प्रीपोजिशन आना चाहिए। उसी तरह से एडवर्बल फ्रेज के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कोई एक प्रीपोजिशन आ जाना चाहिए, और उसके बाद अलग अलग वर्ड्स आने चाहिए जो कहीं ना कहीं क्वालिटी दिखाए, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, हमने बोला क्या? I saw her on yesterday. I saw her on yesterday. Now tell me what is called adverbial phrase. क्या है adverbial phrase? क्या है ये? जल्दी से बताइए मुझे। एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बोल दिया I saw her on yesterday, मैंने उसे कल देखा। और एडवर्बल फ्रेज जो होता है वो क्या बोलता है कि एक से ज्यादा वर्ड होने चाहिए। एडवर्बियल फ्रेज के अंदर एक से ज्यादा वर्ड होने चाहिए। तो बताइए अब यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज कैसे बनेगा? कौन सा है? अभी जस्ट हमने आपको हिंट दिया, आप बता दो मुझे। डू इट फास्ट, जल्दी करो। गुड। हमने क्या बोला? ऑन यस्टरडे। हमने क्या बोला? ऑन यस्टरडे। आई सॉ हर ऑन यस्टरडे, हमने उसे कल देखा।
तो ये ऑन और यस्टरडे दोनों मिलके जो बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है ना। जो एडवर्ब के साथ एडिशनली जब कुछ ऐड हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एडवर्बियल फ्रेज बोलेंगे। चलो अगला देखो, आप ये करो कंप्लीट, फटाफट से कंप्लीट करो। द टेलर मेंडेड, द टेलर मेंडेड द हेम विद अ नीडल एंड थ्रेड्स। पहले तो आप इसका मीनिंग बता दो मुझे, पहले तो आप मुझे इसका मीनिंग बता दो जल्दी से। डू इट फास्ट, जल्दी बताइए मुझे फटाक से। ऑन यस्टरडे, ओके। जल्दी बता दीजिए मुझे, फटाफट से बताइए मुझे। हो गया। द टेलर मेंडेड द हेम, मेंडेड द हेम विद अ नीडल एंड अ थ्रेड, नीडल एंड अ थ्रेड। आपको सबसे पहले यह जानना है कि हेम क्या होता है, नीडल क्या होता है एंड थ्रेड क्या होता है। ये तो सबको पता है, धागा होता है, धागा होता है। थ्रेड का मतलब, टेलर का मतलब दर्जी, ठीक है। मेंडेड का मतलब, मेंडेड व्हाट, टेल मी। विद अ नीडल एंड थ्रेड, नीडल नाउन है भाई साहब, थ्रेड भी नाउन है। जल्दी बता दीजिए फटाफट से। हमने क्या बोला, द टेलर मेंडेड द hem with a needle and thread। टेलर ने क्या किया, झालर, झालर समझ में आता है जो लगाया जाता है, ठीक है ना। टेलर ने क्या किया, झालर को नीडल, सुई और धागा की मदद से सील दिया, ठीक है। तो यहां पे एडवर्ब क्या आ रहा है, ये पूरा जो है एडवर्बियल फ्रेज बन रहा है, ठीक है ना। विद अ नीडल एंड थ्रेड, ये पूरा का पूरा है। मेंडेड द hem with a needle and thread, entire is called what, adverbial phrase, adverbial phrase। but with two preparation है, mended means with a needle and thread, okay। ठीक है, चलो अगला वाला बताओ, नेक्स्ट ये वाला बता दो, ये मजा आएगा। देखो बताओ जल्दी से आप मुझे। He must hug her before sunrise to break the spell। He must hug her before sunrise to break the spell। ये बता दो, मजा आएगा। जल्दी बताइए फटाक से।
नाउ टेल मी, he must hug her before sunrise to break the spell. उसको सनराइज से पहले गले लगा देना चाहिए, गले लगा लेना चाहिए। किस चीज के लिए? टू ब्रेक द स्पेल। इससे पहले कि स्पेल का मतलब इसके पहले कि जादू टूट न जाए, जादू मैजिक, ठीक है ना। आई डोंट नो विच मैजिक हियर इट इज टॉकिंग अबाउट, बट कह क्या रहा है, ऑथर क्या कह रहा है, राइटर क्या कह रहा है, ही मस्ट हग हर बिफोर सनराइज। सूर्योदय से पहले उसको क्या करना चाहिए? गले लगा लेना चाहिए। टू ब्रेक द स्पेल, जादू तोड़ने के लिए। ओह, इट मे आई हैव फॉरगॉटन। हो सकता है कि मैं भूल गया होगा डेली भेजना ग्रुप में, बट आपको पता है कि 9 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है, यू नो। भूल गया होगा मैं। ही मस्ट, अच्छा, इसीलिए लगता है बहुत सारे स्टूडेंट नहीं ज्वाइन किया, वेट कर रहे ना ग्रुप का। बिफोर सनराइज टू ब्रेक द स्पेल, ठीक है। अच्छा, इसमें एक का आंसर बहुत करेक्ट आ रहा है, देखो, ठीक है। बिफोर सनराइज भी क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है। और टू ब्रेक द स्पेल भी क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है। दोनों अलग अलग फ्रेज है, तो एक साथ भी मिला के हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरा है ना, ये एडवर्बियल फ्रेज है। ये पूरा का पूरा एडवर्बियल फ्रेज है, दोनों अलग अलग। देखो, इसमें बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले, हग हर बिफोर सूर्योदय, हग हर बिफोर सनराइज टू ब्रेक द स्पेल। ब्रेक द स्पेल जादू टूटने से पहले, जादू टोना वाला, जादू टूटने से पहले, टू ब्रेक द जादू, जादू तोड़ने के लिए। चलो अगला, नेक्स्ट एडवर्बियल फ्रेज। नेक्स्ट क्या है? ये तो हो ही गया अभी। नेक्स्ट, ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग एडवर्बियल क्लाउज पे। अगेन क्लाउज क्या होता है? अभी जस्ट हमने आपको पढ़ा के भेजा है। क्लाउज क्या होता है? क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, मतलब किसी भी एक बड़े से सेंटेंस के अंदर सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट। अब क्लाउज के अंदर पूरा का पूरा सेंटेंस भी हो सकता है, क्लाउज के अंदर टाइम वर्ड भी हो सकता है, क्लाउज के अंदर एडजेक्टिव भी हो सकता है, क्लाउज के अंदर नाउन प्रोनाउन ये भी हो सकता है, क्लाउज के अंदर एडवर्ब इटसेल्फ भी हो सकता है, ठीक है। तो पूरे को पूरे पार्ट ऑफ सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाउज बोलते हैं। और एडवर्बियल क्लाउज उसको बोलेंगे कि जिसमें कोई ना कोई एक एडवर्ब हो और बाकी सारा सेंटेंस का पार्ट हो, which is working as qualifying any verb, any adjective, right, or any adverb। तो चलो देखते हैं। I saw her when she was playing tennis. I saw her when she was playing tennis. ये बता दो मुझे। I saw her when she was playing tennis. मैंने उसे तब देखा जब वो क्या कर रही थी? टेनिस खेल रही थी। मैंने उसे देखा जब वो क्या कर रही थी? टेनिस खेल रही थी। ये मुझे बता दो। What is called adverbial clause in that? क्या है इसमें adverbial clause? I saw her, आप यहां तक जानते हैं कि ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा वर्ब हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया ना, सारा खेल खत्म। अब जो बच गया ये पूरा का पूरा, जो बच गया ये क्या है? एडवर्बियल क्लॉज है। ये क्या है? एडवर्बियल क्लॉज है। ठीक है, जो पूरा बच गया वो क्या है? एडवर्बियल क्लॉज है। क्लॉज आपको अभी तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज अगला देख लो आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल करो, इसमें आप मुझे ढूंढ के बताओ कि एडवर्बियल क्लॉज क्या है। आई विल कॉल यू एज सुन एज
I get my payment cleared. जल्दी से बताइए फटाफट से. What is called the adverbial clause in that? I will call you as soon as I get my payment cleared. Anybody else? कोई और बताएंगे? कोई और बताएंगे? चलो, इसमें क्या, आई कॉल यू खत्म, सब्जेक्ट, विल, मॉडल, कॉल, वर्ब, यू, ऑब्जेक्ट. अब जो बच गया सबका सब क्या है? एडवर्बल क्लॉज. सबका सब क्या है? एडवर्बल क्लॉज. सबका सब क्या है? एडवर्बल क्लॉज. एज सुन एज जो है, ये एज सुन एज जो है, ये क्या है? एडवर्ब है अकेले. ठीक है, चलो अगले वाले पे आते हैं. नेक्स्ट आ जाओ, आप फटाफट से काम करो. सी सिंग्स एज इफ सी वर अ प्रोफेशनल सिंगर. सी सिंग्स एज इफ सी वर अ प्रोफेशनल सिंगर. मतलब आप मुझे मीनिंग बताइए फटाक से. सी सिंग्स, वो इस तरह से गाती है जैसे कि लगता है कि वो एक प्रोफेशनल सिंगर थी. वो ऐसे गाती है जैसे लगता है कि वो एक प्रोफेशनल सिंगर थी. शी सिंग्स एज इफ शी वर अ प्रोफेशनल सिंगर. देखो यहां पे जब हम आपको कंजंक्शन, एक दिन ये स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको हम कंजंक्शन पढ़ा रहे थे, और उस कंजंक्शन में अगर आपको याद है तो हमने आपको बताया था एज इफ के बारे में. एज इफ के बारे में बताया था. तो जो यहां पे कंजंक्शन है वही यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन भी है. कंजंक्शन, कंजंक्शन एंड क्या, एडवर्ब. मिक्स कर दो सबको तो ये क्या हो गया? एडवर्बल फ्रेज. एडवर्ब फ्रेज और क्लॉज, एडवर्बल क्लॉज. ठीक है, यहां पे प्रोफेशनल क्या है? प्रोफेशनल क्या है? प्रोफेशनल क्या है? सिंगर क्या है? ये बता दो. प्रोफेशनल सिंगर क्या है? अच्छा, सिंगर क्या है ये बताओ. सिंगर क्या है? एडजेक्टिव. हाँ, सिंगर एडवर्ब. चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. आप अगली ओर बढ़ो. खत्म, खत्म हो गया आपका एडवर्ब, एडवर्बल फ्रेज, एडवर्बल क्लॉज खत्म हो गया. अच्छा, जिसको थोड़ा बहुत डाउट रह रहा है ना कि एडवर्ब सर कैसे आइडेंटिफाई करें, एडवर्ब का क्या करें, समझ में कैसे आएगा. ठीक है, समझ में अगर आ रहा है तो ठीक है. अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, जब टॉपिक में स्टार्ट, ये तो प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं ना मैं, तो फोकस आपको प्रोनाउन पे रखना है. ये एडिशनल चीजें हैं, मैं जो थोड़ी हेल्प कर दे रहा हूं आपकी प्रोनाउन को समझने में. टॉपिक हम लोग का प्रोनाउन चल रहा है,
प्रोनाउन के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव, वहां पे डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे। तो फिर प्रोनाउन आएगा, तो प्रोनाउन क्योंकि पढ़ा हुआ रहेगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब मैं लास्ट वाली चीजों को फर्स्ट में नहीं पढ़ा रहा हूं, बट बीच में जो आ रहा है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नहीं समझोगे तो फिर पेपर ही नहीं होगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूं कि ये चीज अगर यहाँ पे है तो इसको कैसे यूज किया जाए। तो अगर दिमाग में किसी का अगर नहीं घुस रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम, हो सकता है ना कि नहीं पढ़े हैं आप, तो अगर मैं एडजेक्टिव बता रहा हूँ, फ्रेज बता रहा हूँ, क्लॉज बता रहा हूँ, उसी की कैटेगरी का क्लॉज बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। तो अगर है तो आप या तो दोबारा से देख लो क्लास, या फिर दोबारा से नहीं देखना है तो आप थोड़ा सा वेट कर लो। जब आपका नाउन प्रोनाउन जब पूरा होगा तो फिर एडजेक्टिव पे आएंगे, तो आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल क्लॉज ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर जब हम एडवर्ब पे आएंगे तो आपका एडवर्ब, एडवर्बल फ्रेज एंड एडवर्बल क्लॉज तीनों खत्म हो जाएगा। तो वहां पे और डीप जाएंगे, कैटेगरीज बताएंगे। जैसे हमने बोला एज इफ, क्या है? एडवर्ब है। हमने बोला एज सून एज पॉसिबल, सॉरी एज सून एज, वो क्या है? वो भी एक एडवर्ब है। हमने बोला यस्टरडे, वो भी एक एडवर्ब है, ठीक है ना। तो कोई टाइम से रिलेटेड एडवर्ब है, कोई फ्रैक्शन से रिलेटेड एडवर्ब है, कोई क्वालिटी से रिलेटेड एडवर्ब है। तो ये सारी अलग अलग कैटेगरीज ऑफ एडवर्ब हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। नाउ दिस इज द टाइम टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम लोग का जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो खत्म हो चुका है, और थोड़ा थोड़ा ही मैं बता रहा हूँ ताकि दिमाग में आराम से है। अभी आप लोग को उतना बड़ा डाइजेस्ट करने का आदत नहीं हुआ है, तो मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा आपका, ठीक है ना, एंड धीरे धीरे मैं आपका जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ाऊंगा। इट इज टाइम टू स्पीक, अभी बोलने की बारी है ना। तो आज हम लोग स्पीकिंग भी करने वाले, बिना स्पीकिंग किए आज जाएंगे नहीं, एकदम गारंटी है इसका, ठीक है। बट इससे पहले मैं आपको कुछ एक इजी सा वर्ड प्रोवाइड करने वाला हूं, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड प्रोवाइड करने वाला हूं जिनको आप जानते हैं ऑलमोस्ट। आई एम 100 नहीं, लेकिन 85% आई एम श्योर दैट यू नो, बट कैसे आप प्रोनाउंसिएट करते हैं इसको वो मैं जानना चाहता हूं। हाउ डू यू प्रोनाउंसिएट इट? आई जस्ट वांट टू नो दैट, राइट। व्हाट डू यू स्पीक अबाउट? सर, स्पोकन इंग्लिश का ग्रामर से कोई कनेक्शन है क्या? बताओ, स्पोकन इंग्लिश का ग्रामर से कनेक्शन ही नहीं है। जब कनेक्शन रहेगा नहीं तो बोलोगे कैसे? हाँ, उतना डीप नहीं है, बट यस इट इज, बिल्कुल है। और अगर नहीं है तभी लिंक भेजेंगे, बोल के दिखाना मुझे। ऑफ कोर्स है कनेक्शन। टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर, टू बी अ करेक्ट स्पीकर, टू बी अ कॉन्फिडेंट स्पीकर, टू बी हेल्दी कॉन्वर्सेशन, so definitely there is a deep connection of grammar with spoken English. अगर आपको कोई ये बता रहा है कि जरूरी नहीं है, so someone is misguiding you. ऑफ कोर्स कनेक्शन है, बट उस लेवल पे जाके हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, बिकॉज द मोटिव इज टू स्पीक। मोटिव हम लोग का क्या है? बोलना है, बस बोल ले उतना काफी है, ठीक है। चलो, कुछ वर्ड हमारे पास है, ये हमारे पास कुछ वर्ड है, आप मुझे बोल के बताओगे कि क्या बोलोगे, ठीक है, क्या बोलोगे ये बताओ। द फर्स्ट इज व्हाट? द फर्स्ट इज व्हाट? आप जानते हैं ये क्या लिखा हुआ है? आपको पता है? LIEUTENANT है क्या? क्या है? ये ऐसा वर्ड है जो प्रोनाउंसिएट होता है एफ के साथ, बट इसमें एफ कहीं है ही नहीं। आपने सुन रखा होगा, यू मस्ट हैव हर्ड लेफ्टिनेंट, आपने सुन रखा होगा द लेफ्टिनेंट, बट एक्चुअली इट इज कॉल्ड ल्यूटिनेंट, है ना। जिस तरह से कैल्शियम बोलते हैं हम लोग, बट एक्चुअल में वो होता है कैल्शियम, तो उसको क्या कर दिया हमने? कैल्शियम कर दिया, क्योंकि उसमें एल है तो कैल्शियम कर दिया, और इसमें एफ है ही नहीं है तो इसको लेफ्टिनेंट कर दिया, ठीक है। तो जितना लोग को भी लगता है कि इंग्लिश ना फनी लैंग्वेज है, ऑफ कोर्स इट इज फनी, आई 100% अग्री विद दैट, इट इज फनी लैंग्वेज, फनी एंड इजी टू, इजी भी है, इजी भी है। मामा को, फूफा को, चाचा को, काका को, ठीक है ना,
ताऊ को, सबको अंकल बोल के निपटा दो, एक बार में काम खत्म। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट इज इजी लैंग्वेज, बट आई डोंट नो व्हाई देयर इज द फियर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश अमंग यंगस्टर्स। क्यों है इतना डर? सो फर्स्ट इज कॉल्ड लेफ्टिनेंट। पीपल यूज टू स्पीक, जहां पे एफ है ही नहीं, बट हम लोग प्रोनाउंसिएट क्या करते हैं? लेफ्टिनेंट। नेक्स्ट इज व्हाट? कर्नल। there is no r, but we pronunciate colonel. Of course r is little silent or r is little soft into that, but we pronunciate colonel, but actually it is not colonel, it is colonel, right? So ये दो ऐसे वर्ड हैं जिनमें कुछ ऐसे लेटर जो आते ही नहीं है, बट हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं, और लोग उसी तरह से उसको अग्री भी कर लेते हैं, मान लेते हैं, सुन लेते हैं, और कभी उसको इंटरप्ट भी नहीं करते कि नहीं ऐसे नहीं होगा, लिeutenant होगा, इट्स नॉट अ लेफ्टिनेंट, ओके, इट्स अ कॉलोनल नॉट कर्नल। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये तो इजी है ना, दिस इज इजी। नाउ टेल मी व्हाट इट इज, बता दो आप मुझे। अगर किसी का मन में आ रहा होगा ना कि ये क्या है सर, आप बताइए ना, ये क्या कर रहे हैं आप, ये जनवरी फरवरी नहीं आता मुझे, तो आता है तो ये बता दो कि आप FEBRUARY को आप क्या बोलते हो? फरवरी और फेब्रुअरी। नाउ it is what? It's not February, it's February, ठीक है? it is not Wednesday, it's Wednesday. D is complete soft, it's Wednesday. This D is complete soft, it's Wednesday, not Wednesday, Wednesday. It is not April, it's April, not April, April. It's not August, it's August, it's not August, August. It's not October, it's October, it's October. It's not October, it's October, Next. Next, it's not May, it's May, ठीक है? चलो, एक मैं फ्रेज लेता हूं ना, अभी जैसे जिसका इसका सीजीएल का पेपर था, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, किसको इतना दौरा पड़ रहा है? आगे तो बोल लो, हेलो 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 हेलो, क्या है, आगे तो बोलो। टेल मी व्हाट? Tell me the question, complain, whatever you have, tell me. Hello sir, hello sir, hello sir. What is this? तो ग्रीटिंग ठीक है ना, एक बार हमने देख लिया, ग्रीटिंग हो गया, पूरा कमेंट बॉक्स भर दिया पूरा हेलो 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 से, जान ले लेगा। हाँ ठीक है, देखते हैं, अब बीच बीच में हर कमेंट को नहीं ना बोल सकते हैं, हेलो गुड इवनिंग, हेलो गुड इवनिंग आते रहता तो क्या बार बार हम वही बोलते रहे, डिस्ट्रैक्ट होते हैं सारे लोग। चलो, मैं नहीं होता हूँ, ठीक है, मैं तो बात करने के लिए हूँ, आप सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो ना, कितना को लोग नींद मार के बैठ के पढ़ रहे हैं, अब उन लोगों के बीच में हर जगह पे हम
इंटरप्ट करेंगे तो दिक्कत होगा. नाउ विल टेक अ ब्रेक एंड आई एम अबाउट टू स्पीक अ फ्रेज. फ्रेज इज रिटन देयर. फ्रेज लिखा हुआ है आपके सामने. फ्रेज लिखा हुआ है. चलो, मैं क्या बात कर रहा था, मैं बोल रहा था कि अभी जैसे जिसका इसका सीजीएल का पेपर कंप्लीट हुआ है या फिर जिसका इसका भी सीजीएल का पेपर है वो जाने वाले हैं देने के लिए, तो हमने बोला गो एंड ब्रेक द लेग. पेपर देने जाने वाला है और हमने क्या बोला, गो एंड ब्रेक द लेग. नाउ टेल मी व्हाट डज इट मीन, गो एंड ब्रेक द लेग. गो एंड ब्रेक द लेग, व्हाट डज इट मीन. ये मत बोल देना प्लीज कि सर आप तो बोल रहे हैं कि जाओ और पैर तोड़ के आ जाओ. ये मत बोल देना, ऐसा तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा. नाउ टेल मी, tell me, go and break the leg. Break the leg. Break the leg is a phrase for good luck. For good luck. Now, इससे फनी क्या हो सकता है बताओ, इससे फनी क्या हो सकता है. Go and break the leg. चक द फटे. Go and break the leg in season 2025. 2026 का जरूरत ना पड़े. Bro, go and break the leg. I'm here and waiting for you. मैं रुका हुआ हूं और तुम्हारे लिए वेट भी कर रहा हूं. Go and break the leg. हाँ, भाग्य तुम्हारे साथ हो, तुम भाग्य के साथ हो. You are Genjis. Don't believe in भाग्य. भाग. Don't believe in भाग्य. Only भाग. Running is the best method. Okay, so we have completed some words also. Phrase also. We have completed the phrase break a leg. Now, this is the time as I promised कि आज मैं डिस्कशन करके ही जाऊंगा. So I have told you some words. I told you the accent also. I told you the pronunciation also. I told you the phrases also. Now this is the high time to have the conversation. But before conversation, I'm gonna tell you something. In the last class, I already told and discussed what, and even I have given you the topic. I have given you the topic that what was the topic? What was the topic? Movies are the mirror of society or not. ये मैं टॉपिक आप लोगों को देके गया था एज अ टास्क, ठीक है ना. इसको थोड़ा सा और कस्टमाइज करता हूं मैं, इसको थोड़ा सा और कस्टमाइज करता हूं मैं. आर मूवीज distracting the young generation, distracting the young generation. Are movies distracting the young generation? Now everyone will have different opinion, different logic and different examples. When the movies start releasing everywhere, it has been seen the majority cases that in majority which kind of content is given to you. As an example, at this time your classes are going on, but simultaneously on your display the numbers of others videos also are running. But to authenticate that among all these videos lectures, which video is more authenticated and absolute for you, it is the perfect way to find out that where you are getting the quality, where you are not getting the quality. जहां कहां पे आपको ज्यादा क्वालिटी मिल रहा है, कहां पे आपको कम क्वालिटी मिल रहा है. Similarly, in movies also we have to find out the sources and get to know that in much of the quantity what we are getting the most.
We are getting qualities or we are getting disqualities. We are being aware or we are being discouraged. We are being threatened or we are being empowered. What has been done? What is being done by these movies nowadays? As let's start with the good movies and good examples. If we are talking about the movies, so the numbers of good movies are there in the society and it has been released, and even it has given the relation to the entire citizen of the country. It was a generation where each and every single movies had a relation. Each and single movies were the mirror of society. They were only flashing in front of the eyes of the common people whatever is happening in the society, and people will come to know that what is going on in the society, and they were directly relating, oh my god, it is happening in my village, oh no, I have seen there, right? They were realizing and they were enjoying. Like recently a student told me about Panchayat series, right? The Panchayat series, when released, the first ever series released, the people all of a sudden shocked and they loved it. They realized that absolutely the same thing is happening in my village and I have seen, I have lived this life, and they started giving the love to that series. Similarly, Sam Maniksa, the Lieutenant Journal, his character, the bold personality ever, the strong personality ever, when it came through the movie, people got to know about it, and the respect has increased in the eye of the people. So that movie increased the respect of a soldier in a country, that how he has sacrificed the entire life for the nation, even after having a lot of opportunity to do something else and do much more than that. But after that generation, a new generation came where this is called the generation of Gen Zs, where the people got oriented on money. Earlier, the people were vision oriented, but now the people has been money oriented. To make money, they can do anything. They can do anything. Like, as we also are Gen Zs, but sometimes it is required to self-realization also, that where we are going, what we are thinking, what we are observing, what we are experiencing, every single thing. Like the song, you are listening that song that you don't know about, that you don't understand the meaning, that you can't sing in a single take, right? The dialogues, such kind of dialogues are there which are not really existing in the present, right? The dressing sense, there is no dressing sense among the youngsters, either they are the boys or the girls, whatever they want they started wearing, and after opposing they start fighting also. And these things has been shown in the movies. They started disobeying the gods. You have many more, in the many more movie you have seen that the Lord Shiva is dancing on the street. Lord Shiva is begging along with the street and nobody is giving him money, and the people are making fun of him. What is this? What is this? This is not an entertainment. This is called defaming. This is called what? This is called a kind of content which is not acceptable anywhere. The entire universe has accepted that the Lord Shiva is the most powerful ever power, spiritual power. The entire world accept it. Not only we are, but despite of knowing all these things, we have just seen in the movie and started making fun on the name of entertainment, right? If you will see the majority of the movie, except one or two, specifically in the Bollywood, you have seen that in major of the cases they have the multiple affairs. What kind of place is this? Is not the mirror of the society. If you have seen in your village, if you have seen in your home, there is no multiple affairs of a man or a woman in your home, right? So how it can be the mirror? In one side there was a generation, it was completely related to your village or your city. Now there is a generation where there is no relation at all. So are movies distracting youngsters?
misguiding youngsters, or movies are helping to make their career, movies are helping to aware them. Now, I'm going to give you the link. Everyone be ready with your speeches. If you will have the speeches, after speeches, we will have argument also on this topic. And finally, we'll get the conclusion on the basis of your arguments and the statement. Wait for a minute. एक और गाना याद आ रहा है, जिसको नहीं पसंद आ रहा जाके अपनी भैंस चराए. सर इसको करना क्या, बोलना है भाई साहब. हाँ, मूवीज आर गुड और नॉट, ये कल का टॉपिक था. हाँ ठीक है ना, उसी को थोड़ा सा कस्टमाइज किए हैं. चलो मैं लिंक भेजता हूँ 1 मिनट के अंदर. थोड़ा सा रुक जा रुक जा रुक जा, मैं लिंक भेजता हूँ, उसके बाद बताता हूँ मैं. थोड़ा सा रुक जा.
चलो सार लोग ज्वाइन करो. ज्वाइन कर लो फटाफट से सारे लोग. It's okay. Now, is my voice audible? Yes, sir. So everyone has joined. It's time to start. It's time to initiate the round of speaking. And the topic was the movies. Movies are encouraging or distracting the youngsters. What it is? Sir, you are not audible rightly, sir. What? What is not audible? Not sound not clear. Okay. Sound is not being clear. Is it clear? Yes. Now. So let's the round get started. Not clear this time, sir. Again not clear. Yes, sir. What would I do? Wait. Okay, so is it clear? No, sir. Still not. No, sir. Then I'll have to take a Bluetooth. Yes, sir, clear. Clear? Okay. Now, so start speaking on the topic. Let's start putting the opinion first of all, and after that, let's start putting the opinion first of all, and after that, we'll carry forward the topic and turn into the debate. Yes, sir, I am. And finally, we'll get the conclusion on the basis of your argument. Actually, I have already discussed a lot. Voice is not clear. Please, sir, come to the near to mic. Now, is it clear? Yes, sir, not clear. Oh my God! तो एकदम मुंह में हटा के बात करना पड़ेगा मुझे. Okay, ठीक है, चलो. Let's start speaking. Who is going to be the first? Now, let's start with the people who are in the queue first. Brin Singh, you will speak. Sir, first question. Why did you not send me the link to today's group? I am not joined the class. I said I forgot. मैंने बोला कि मैं भूल गया था. अरे मान जाओ, देख लो YouTube पे आ रहा होगा.
स्पीकर एंड वीडियो एक बार चेक कर लो ना, देखो आ रहा नहीं आ रहा, चेक कर लो एक बार। आ रहा है क्या? इज दैट? हेलो, हेलो, एक सेकंड रुक जाओ, बस एक सेकंड, खत्म करो इसको। Now, is my voice audible? So, okay, start speaking. Is that audible? Reply. Is that audible? Tell me. Listening, listening, listening. Continue speaking. Now speak. Idea, source of fun and
comedy is healthy to reduce stress and stress. Film can offer different culture, historical events, and human relationships. So it is a movie are the mirror of society. Okay, so now, according to Bryn, the movies are mirror of society. Now, the next is in the queue, honey. Honey or honey, what it is? Who is honey? Start speaking. Okay, chalo next. Happy Priya. Sir, good evening, sir. Good evening, everyone. And I am going to speaking about movie is good or not bad. According to me, movie is bad in this generation, sir. If you are not a speaker, you are not allowed to allowed to stay on the call. Yes, sir. Okay, you continue. Sir, I just get the first of all, everyone will give the introduction after that discussion. Okay, now the next is going to be Ismat. Good evening, everyone. Good evening, sir. I thought the movie is good because the movie is practical knowledge for me and learning and gain knowledge and every new words are learning and uh, how how to make everything. So I thought it's a good. Next. Next. Sir, and good evening, all of you. Today our topic is the movie is good or bad. My thought is movie is bad because so many movies are so many movies are available in our society and we can see different types of movie but in this movie education related and in this movie entertainment also related and those people are not those people are not getting sometimes he said and he showed movie that after that he feel happy and somebody is live alone and they watch movie and they show TV serials after sometimes he attached not सर इसको क्या बोलेंगे उससे जुड़े हुए रहते हैं Connected to that. They are connected to the movies and serials. That's all my opinion. Movie is good. Okay, now let's open the debate for everyone that the movies are encouraging the youngsters or movies are distracting the youngsters. Movies are giving the helping hand to the society or movies are only taking the interest from the society, nothing else. Let's open for everyone. Then I would say first, movies now those movies are impact in our society and as well as in the youth generation. And I would say if we see the 10 years ago past, and that time movies are made a good society. And right now, any kind of movies are made, and like in short where the short spans, and there are lots of things made impact in our society and our youth also. And after watching the movie, we
things to learn from the movie. Next. Continue speaking, everyone. And last speaker said movie is not good and it affects society. So in my thinking, movie is good because now old time people don't watch movies, so people have not more knowledge. Now at the same time, youngsters watch a movie. So people, youngsters have and Gen Z have different types of knowledge. Movie are bad, so why because they create different types of movies, and why every weekend people like watching movie in theater. So why theater all that otherwise movie bad, so parents are not allowed. Like some movies, maximum movies is good. So parents also allowed with child watching the movie. So movie, in my opinion, movie are the good for society. Okay. After watching movie, many youths are and everyone hurt many of times. Youths are committed suicide, and many of the youths are thinking, considering like a hero and heroine as God and goddess, and they are considering bad impacts in our society also. Continue. Next. So we can learn from movies, so how to handle our family problems, and how to handle society in society social, and depend on the youngster who they are learn this type of movie. So some movies are moral ethics. We can learn this type of movie. It is related our own, and it is show on the movie theaters also. Sir, I would say watching this movie and in our society right now, and every youth to generation, and like you, we can say our youth should like 10, 12 students, school students also. They don't school, they don't go to tuition, they don't obey their parents, his parents, because of and they don't and they don't go in homes because of the movies. They always distraction. They always get the distraction. They always get the distraction. Because of these movies, sir. Okay. Okay, movie can also different cultures, historical events, and human relationship. Like the movie released Abu Dhabi. Then people now don't going to other countries, so also saw in India and saw this other places. So people have get knowledge. People get knowledge. Like you said, this movie like distract youngsters, but some only but Youngsters. Doing the private job like became very stress and painful. Then people only weekend watch the movie and like painful and like given therapy. So it is good because people also every day is listening the song. So it is good. They
different questions is asked by everyone. Yes. Sir, if you Okay, continue. So, my side question. So, understand, don't watch a movie. So understand people not get more knowledge and like emotional relationship. Understand also watch the movie and this type of little mood, this type of relation bad. So, it decided now at time. So my thinking movies are mirror of society. Next. now generation in every village and every home also we can watch movie and with our parents because of lots of news of things and we I would say sir, this because of this movie the students are distracted because of this professor and because of this movie and in our village we are in a rural village and we are quarreling each other make sir because of this movie like this movie sir. Okay, let's give the chance to Ismat and Pammi. Both of you also have to speak. Yes, I agree. Some movies are bad, emotional, subject for a youngster, but some movies are not bad. Some movies are good and learning for me and other person the practical knowledge and gain like Three Idiots, Suryavansham, and Bulandi, and जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. It's the learning the practical knowledge gain practical knowledge for hours and messages key messages messages new work सर उसको हिंदी में इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि ये गलत नहीं है खुल के जीना चाहिए और मतलब डिग्री सिर्फ नाम से लिए है और मेन नॉलेज This is absolutely not bad. Live with an open heart. So I thought every movie is not good, but some movies are good and learning and practical knowledge. Knowledge. Okay. Sir, because of movie. Sir, Speak. in our mobile, one notification fell down. It is a trailer. It is a short term of a movie. They are overview. It is an overview. Okay. Some people and some students are curiosities come. What to do, what not to do in this movies. They are curiosity arises and. They want to be watch this movie. What to happen in front of the movie. इसके बाद after that what happened in the movie and curiosity is must be in the whole our society in our youngster life and that's all. Okay, next. Because of a movie, we lost our valuable time because of a movie. And I would say, sir, because of a movie, in our generation, youth and lads and boys, both are watching movie. Their thinking is very bad, and they are thinking like hooligans. They are thinking, and we also have, sir. I would say before if we see the 10 years before that time, there is no hooligans. There was no hooligans. There was no rare
and committed suicide. But now there is lots of things sir happened sir. It is because of movies and mobiles sir. And also always. It is all because of means you want to say that the criminal activities which are increasing, it is because of movies. Yes, sir. Yes, sir. Of course. This is the main impact, sir. And because of this movie, and we lost our money because of this movie, and because of this movie, I went to cinema hall. I went to any kind of theaters. Lots of things. There is scolded them because of this movie, and we are many important things there, sir. Because of the movie, we are distracting. Now that is the main reason of our youth generation. We cannot earn any kind of number because of this movie. Because I always remember this kind of things, like naughty things, it always come to our mind, sir. Okay. My question is, how can judge this movie? How can judge a movie is good or bad? Question is, how can a person judge a movie is good or bad? This movie is bad or this movie is good? Yes, I have also said in this time. Some movie is learn more about things, but some movies are distracted some people and as well as the genre also. Who are they said, sir? I want to say who are they said who all of many movies are good, and I would say, sir, some positive things some in this movie, but after negative thoughts we can see, sir. If I said question, you are thinking movie are bad, so Uncle start watching and learning school the gun. But now you suggest them why choosing the competition exams, movies related movies question, asking the question for related movies. Movies related question, right? Yes, why choosing? Because it is good. And movies and No, if it is about question, then the question selectors are dumb. They are not educated. That is why they are choosing the question from movie. yes, and like movies bad, so not bad. Different cultures, like people saw the movie and learn the different cultures. Not all people have going to other places visiting, but also watch the movie and learn the different cultures and different languages, different accents. Language, different places, different different cultures, etc. Learn. But some movies are bad because you thought movies are good. Well, I agree. In movies are a lot of the scenes shows and the bad thinking, but it's not a bad thinking. It's a realistic. When I watched, sir, when we watch movie, and that time we lost our 2-3 hours and unknowingly, and after that we can say, I would say, sir, in our home, every homes, and they don't work, and during the work they watch the cinema, they watch the drama, and there's the main reason after over the cinema they started the quarrel and in the home because of this movie, and also the movies are distraction for everyone, sir, nowadays, and I would say, sir, and if we see nowadays a small
maybe like 1 2 years children, they don't know anything about environment. But say he watch movie with his parents. It is the bad impact to our generation and our small children. Okay, anybody else? Sir, he said movie was the a small child and they fat, but old time child not active like nowadays or a small child like very active and sir watch the movie and TV so search and observe like children's mind very fast so it is good. Sir, she said that children's mind is very yeah, yeah, what's that? Good. Very good. I would Sharp. say, sir, nowadays, I don't think there is any youth they remember 10 numbers. And because of mobile, because of movies, because of lots of this kind of pictures, we can't remember good things, and we cannot focus our studies. We cannot very important things in our who are they studying hostels, boys and I would say boys and girls. They don't concentrate with the studies. They are concentrated and then they always watching the movie and watching the movie and they woke up at 8 9 o'clock 9 p.m. after the day after tomorrow. It is a very bad thing, sir. You said movies was very bad, but now in present time also we are soldier. Okay, so now a small child like this type of gun shoot. So all child had not possible in houses. And also saw this type of foods, gun shoots and they firing. So where places are hiding and such people Hide. hide. Hide and child and people mind active. So this is not possible without watching movie and TVs. There is for child to the child means this is they have to that is the thing and the child time they don't they won't go to watch to serial they go it is not for them. Yes, continue. Sir, can we permission? May I go on? Of course, we will over the class after 1 minute, after conclusion. Okay, so everyone had a lot of argument, huh? Then I will add one point, sir. Mm-hmm. Like it is very serious issue in the society. Most of the child and also youngsters are suffering from ADHD. ADHD means attention deficit hyperactivity disorder. It is a lack of patience and aggressive mind. If any child watching any type of movies and serials and cartoons in TV, so they are watching properly and they focusing on the right activity. If uh, anyone try to pull their if anyone tries to switch off the TV, so child directly get aggressive mode, and they are just crying too much, and this thing directly affected on his mind. So it is not only for the child, but also one channel is like Coco Melon channel. Nowadays it is worldwide popular in YouTube. So this type of channels increasing day by day. Topic is channel. Today's topic is Ma'am,
So, ma'am, it is related, ma'am. You have to understand, ma'am, it is related. Okay, you continue. Sir, you are it's true, yes. So these things are the bad things going in the society. So we have options like government always provide these are the See, actually, we are talking about movies. And if the child, the teenager doesn't have the smartphone in their hand, actually they are not allowed to visit in theaters. If they are in the home, their parents are in front of them. So here we are not talking about the television, right? If we will come to the television, definitely we will include. And whoever is going to movie theater, either they are the adult one, their families, their youngsters, right? So talk on the basis of that. Of course these things are coming, the aggressiveness in the child, the brain dummy, the brain synchronization, the anger issue, right? Being short tempered, being the lack of patience, all those things problems has been created among the child, the teenagers. But we will discuss later. Here we are discussing about the movies specifically and how it is impacting us. Understood? We'll talk about all those things, whatever is happening, but stay today on the movies, that how it is impacting us. also, sir, we learn many things with the help of movie, and we cannot expect too much information from movie because movies creators are added too much many types of bad scenes in the cinema. But we have option to understand, and we have option to switch on, or if anyone want to, if I only focus on learning something from that particular movie, so if I want only focus on their storytelling and story writing, and and also, sir, with the help of movie, we understand, and it is always mirror of the society, sir. We have too much examples, like I already mentioned in the classroom, Western movie Article 370, and Pushpa movie also, sir. One thing, Pushpa we already mentioned in the classroom, Pushpa movie teachers are taught us like attitude. So I'm supporting, I'm standing in some movies are always mirror of society, sir. Okay. So, sir, I would say in this generation, who are there? Now we have done a lot. We have done a lot. It's time to take a leave. But before that, whatever we have discussed, it is required to have conclusion. Yes, there is the different genre of movies, and the work of the movies are to entertain, aware, and make the people empowered through their content. But the movie makers nowadays has been money oriented. Numbers of times I have already stated about this, and I'm speaking with complete responsibilities, that movies work is to show the real image of the society, that what is going on, and it was about to do also. But movie makers, as I said, they are the money oriented. So they started reading the mind of the youngsters, that what the actually youngsters want, and according to them they started providing the content, not according to the ethics or the civic sense, that what is required in the society. That is why in majority of the cases youngsters and society too get distracted by watching movies. Haven't you seen that when the youngsters started watching Kabir Singh, how aggressive they become in the case of their love angles? Haven't you seen? Haven't you experienced it? Of course it is. When you have seen Kabir Singh movie and you came out from the theater, you must have heard the numbers of youngsters listening to them, that the boys must be like Kabir Singh, right? You don't haven't you heard? Of course you have. So Kabir Singh movies, how it is teaching the youngsters that disrespect the girl, suppress a girl, exploit a girl. No, not at all. This is not the name of love. Similarly, the numbers of others movies also are there. Like the movies like KGF, yes, it is based on the good subject, but the aggression which has been displayed into that, after that we have seen the animal movie, right? You are not valuing the life. What are you talking about?
Without values, the life is nothing, and there is no value of life. In that particular movie, the human being has been cut like they are cutting the vegetables. Where we are going, what we are teaching the society, what we are teaching the youngsters, teenagers, somewhere it will be available on the YouTube, and the later when the youngsters or the teenager will start watching that movie, what they will learn, how they will get impressed. You know that the better thing, the bad thing impress more comparatively the good thing, specifically the child brain, the teenagers. So at that moment of time, it's a movie maker responsibility to show the things that is required to aware, to empower, and make them strong. But the movie makers are showing the content to distract, to disobey, to ruin the culture, all those things, and this must be stopped. Some of the movies which are really good, that is biopics, autobiographies, that is real incident based movies which has been released, but they are not getting blockbuster. You have seen Kashmir File, it hasn't been blockbuster. Yes, the people liked it, but some of the people opposed it. Kerala File, you have seen that this is showing the real picture of the society, that what is going on. People started fighting that this movie is inappropriate. Manji the Mountain Man, you have seen that the movie got blockbuster later when the people realized that it is absolutely correct and it is the lesson giving movie. But when it was released, there is very few movies which has been based on the science fiction movie, which gives you the vision, which gives you the compulsion to think that this can be happen. I have already talked about the movie which has released in the foreign countries, that is called Avenger. It was a kind of movie which has given the vision to the youngster upcoming generation that this kind of machine can be created, and nowadays it has turned into the practical. What such a thing have you seen in the Bollywood? No, not at all, nothing like that. So the movie's work is to do all those things what we are expecting, but nowadays movie started playing with our brain. Somewhere we are finding that it is correct for us, somewhere we are finding that if it is not correct, then why we are going, but it is our compulsion. There is 4 theaters in your city, and in all the theaters somewhere it has been displayed Houseful 5, somewhere it has been displayed Sayara, somewhere it has been displayed Welcome, somewhere it has been displayed Tismarkha. 4 theaters are there, 4 movies are there. Anyone you will choose that is not correct for you at all. So in that particular case, it is not your fault. It is the fault of everyone together. Right? So together the initiative must be taken, specifically the movie makers. So the work of movies are to affect us in a good way, not in a bad way. ठीक है? Okay, so this is enough for today. We'll see you in the next class with a different topic. Till then, thank you. The class is now over. No, not at all. There is no holiday. But offline class will be suspended because tomorrow is a Sunday. Okay. Thank you, sir. Good night, sir. Good night.